Yes, students. So now we are going to start with classification of crystalline solids. As in section 1.2, we have learned about the amorphous solids and they have a very short range order. However, most of solids are crystalline in nature. For example, metallic elements like iron, copper, silver, gold, non-metallic elements like sulfur, phosphorus, iodine, and many more. Compounds like sodium chloride, zinc sulfide, yeah, etc., naphthalene form crystalline solids. And if they are forming crystalline solids, we should have a sort of classification, to make the study of crystalline solids easier. Classification of solids can be classified on the basis of intermolecular forces. Yesterday I was telling you, means basis of the classification is very important, operating in them into four categories. What? Molecular solids, first category; second, ionic solids; metallic solids; and covalent solids. Let's discuss about molecular solids. Molecules are constituent particles of molecular solids. Molecular solids की जहां तक हम बात करें तो उनके जो constituent particles हैं, किसी भी solid का एक constituent unit होगा. So constituent particles here are molecules, right? These are further divided into following categories. Okay. So non-polar molecular solids, polar molecular solids, and hydrogen bonded molecular solids. I have told you that non-polar molecular solid होने का मतलब है mu net means net dipole moment is equal to 0 for their molecules. Polar molecular solids में आपके polar molecules होंगे और इनके लिए mu net, that is net dipole moment, will not be equal to 0. एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा होगा और किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इंटरैक्ट होगा. They comprise, okay, first of all we are going to discuss in detail about non-polar solids. They comprise of either atoms, for example argon, helium, noble gases हो सकते हैं, और molecules जो कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बने हो, जैसे H2. नॉन पोलर मींस सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स के बीच में. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग H2, so 2H atoms both are having same electronegativity. जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तभी आपके मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग एक तरफ होगी और पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे. अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं तो नो चार्ज, और नो चार्ज मींस नो डायपोल मोमेंट. So H2, Cl2, I2, etc. can be the examples here. In these solids, the atoms or molecules are held by weak dispersion forces or London forces. Okay. And these are non-conductors of electricity. ये electricity conduct नहीं करते हैं. They have low melting points. इनके melting points low हैं because इनके molecules के बीच में intermolecular force of attraction कम है. All right. These are generally liquids or gases at room temperature and pressure. Now next we are going to discuss about polar molecular solids. इनमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले एटम्स के साथ मिलेंगे. फॉर एग्जांपल HCl अगर मैं ड्रॉ करूं, सो HCl, ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज समवॉट 2.2 एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज समवॉट 3.1. ओके,
सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज ओवर इट, एंड हाइड्रोजन इज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर इट. ओके, और जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डाइपोल, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. ओके, सो यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट निकल करके आएगा. इट मींस द मॉलिक्यूल इज पोलर. The molecules of substances like HCl, SO2, etc. are formed by polar covalent solids, polar covalent bonds. The molecules in such solids are held together by relatively strong dipole-dipole interaction. Right? एक मॉलिक्यूल में डाइपोल है, दूसरा मॉलिक्यूल इसी तरीके से होगा, उसका प्लस, एक का प्लस और दूसरे का माइनस के बीच में एक इंटरेक्शन होगा. दैट इज कॉल्ड डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन. एंड दीज फोर्सेज आर कंपैरेटिवली stronger than London forces or dispersion forces which were acting in case of non-polar molecules. As a result, we will see that the melting point of these solids will be greater. Okay, the molecules in such solids are held together by relatively stronger forces, that is dipole-dipole interaction. These solids are soft and non-conductors of electricity. इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी तभी आएगी जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर मूवमेंट ऑफ आयंस होगा, अदरवाइज ऑल आर नॉन कंडक्टर्स. हाई मेल्टिंग पॉइंट्स आर एंड आर हायर मींस सॉरी देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई एज कंपेयर टू नॉन पोलर्स. इसके बावजूद मेनी ऑफ देम आर फाउंड इन गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. ओके, फॉर एग्जांपल सॉलिड SO2, solid ammonia are examples of such solids. Now we come to hydrogen bonded solids. The molecules of such solids contain polar covalent bonds between hydrogen and fluorine, oxygen or nitrogen या फिर कोई दूसरा more electronegative atom. Okay, strong hydrogen bonding binds molecule of such solids like H2O. एक्सीलेंट केस है वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, एंड इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी वजह से वाटर में आपको एनामोलस एक्सपेंशन देखने को मिलता है. आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट द एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, राइट, विच इनेबल्स द एक्वाटिक लाइफ टू एग्जिस्ट. अगर एनामोलस एक्सपेंशन वाटर में ना होता तो आइस का डेंसिटी कभी वाटर से कम ना होता, और इस केस में आइस सीधे नीचे बैठ जाया करता, ऊपर फ्लोट नहीं करता, और जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ठंड शुरू होते ही, मतलब जैसे ही फ्रीजिंग स्टार्ट होती है उनकी डेथ होने लगती, राइट. सो एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर की फैक्टर्स behind the sustained life of aquatic animals, right. They are non-conductors of electricity. ये भी non-conductors हैं electricity के. Generally they are volatile liquids. Being volatile means being able to evaporate. Evaporation, I'm not saying vaporization. Please have a key idea of the difference between vaporization and evaporation. Evaporation occurs at any temperature, but vaporization occurs at only boiling point. Evaporation is a surface phenomena, vaporization is a whole body phenomena. Soft solids under room temperature and pressure. Yeah, these are soft solids. मतलब generally ये soft solids होते हैं. Arnav, whatever you want to ask, please type the message. By raising hand, you will not be able to ask anything, beta. Fine. So this was all about the molecular solids. Let's move forward. Now we are going to discuss about the ionic solids. As the name is suggesting, ionic solids are the solids in which intermolecular force will be ionic force or electrostatic force of attraction. Ions are the constituents particle of the ionic solids. Molecular में molecules थे. Such solids are formed by three-dimensional arrangement of cations and anions bound by strong coulombic forces, that is electrostatic force, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में काम करेगा.
These solids are hard and brittle in nature. हार्ड होने का मतलब काफी हार्ड है और मजबूत है. ब्रिटल होने का मतलब एक बार टूटेंगे तो बिखर जाएंगे. ओके, ब्रिटल का अपोजिट है मैलिएबल. मैलिएबल में आप हिट करते हैं तो वो फैलता है, एक्सटेंड करता है, शीट फॉर्मेशन कर देगा. बट ब्रिटल सॉलिड को आप हिट करेंगे ज्यादा फोर्स से तो वो टूट के बिखर जाएगा. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस. ओके, brittle in nature, they have high melting and boiling points. Since the ions are not free to move, यहाँ पर ions move करने के लिए free नहीं है. They are electrical insulators in the solid state. Solid state में ये electrical insulators हैं. However, in the molten state, मैंने बोला था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तभी आएगा जब आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो या फिर आयंस का मूवमेंट हो. मींस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है तो फ्लो ऑफ करंट हो ही नहीं सकता. ओके, सो सॉलिड स्टेट में ये भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं. बट इन मॉल्टेन स्टेट, दैट इज जब इनको हम मेल्ट कर देंगे या फिर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ओके, तब उनके आयंस मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड बिकम इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, नेक्स्ट, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं. कॉमन एग्जांपल आपका NaCl हो सकता है. All right. Now we are going to discuss about metallic solids. Metals are orderly collection of positive ions. होता क्या है metals में, जब आपको 11th में मेटालिक बॉन्ड पढ़ाया गया होगा, सॉरी आप लोग 11th में हैं, नो यू आर क्लास 12th. ओके, सो जब आप लोगों ने 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा बेटा, एट दैट टाइम आपको बताया होगा दैट मेटालिक बॉन्ड का मतलब है कैटायंस ऑफ मेटल फ्लोइंग इन द sea of electrons, in the sea of electrons, right? ओके, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते थे. सो कीप दिस थिंग इन योर ब्रेन एंड देन स्टडी द मेटालिक सॉलिड्स. इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. Metals are orderly collection of positive ions surrounded by and held together by a sea of free electrons. These electrons are mobile and are evenly spread out throughout the crystal. Each metal also contributes one or more electrons towards this sea of mobile electron. हर मेटल ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए होते हैं जैसा वो आयन फॉर्म कर रहा होता है स्टेबल स्टेट में आने के लिए. These free and mobile electrons are responsible for the high electrical and thermal conductivity of the metals. Underline this point. When an electrical field is applied, these electrons flow through the network of positive ions. Similarly, when heat is supplied to one portion of a metal, तो thermal conductivity भी electrons के movement की वजह से ही possible हो पाता है. Another important characteristic of the metals is their luster. Okay, metallic solids have luster, some shining and color in certain cases. ज़्यादातर metals आपके grey या white होते हैं. Okay, except some examples like gold and copper, which are yellow or reddish in color. This is also due to the presence of free electrons in them. हाँ, अब इनमें कलर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे आ रहा है, तो ये आप लोग थोड़ा सा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया आपको होगा अगर, तो वहां पर आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाते हैं तो दे एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड देन दे रेडिएट सम एनर्जी. ओके, तो जो एनर्जी रेडिएट होती है वो आपको लस्टर के फॉर्म में दिखती है. कई बार एफ सेंटर फॉर्मेशन हो जाता है, बट एफ सेंटर इज नॉट द टर्म विच वी आर सपोज टू यूज इन केस ऑफ मेटालिक सॉलिड्स. So just use the term electrons, free electrons. Metals are highly malleable and ductile. Being malleable means they can be converted into thin sheets. They can be hammered into thin sheets. आप एक मेटल का पीस लीजिए, उसको हैमरिंग करिए, वो टूटेगा नहीं, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, फैलता चला जाएगा. ओके, एंड बीइंग डक्टाइल का मतलब होता है they can be stretched into thin wires.
Some metals like gold and silver are highly malleable and highly ductile. Okay, platinum is also the example. Now we are going to discuss about the covalent or network solids. I hope students आप लोगों को समझ में आ रहा है. If you are not able to understand any of the concept, you can ask in the chat box in your group, or when this video is on the YouTube, you can ask on the comment section as well. Covalent or network solids, now we are going to study. What are these? Yeah, please keep your brains open. A wide variety of crystalline solids of nonmetals result from the formation of covalent bonds between adjacent atoms throughout the crystal. Yeah, कई सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड नॉन मेटल के कैसे बनते हैं? जब उनमें एक क्रिस्टल में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है एडजेसेंट एटम्स से. फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, फॉर एग्जांपल डायमंड. ओके, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एटम्स कई बार थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स. ओके, एंड फर्दर इट कैन एक्सीड. तो नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब मोल्स में नंबर चला जाता है. यू नो, मोल इज अ वेरी ह्यूज नंबर. सिर्फ आपके पास अगर 12 ग्राम डायमंड का टुकड़ा है तो इट इज हैविंग 1 मोल कार्बन एटम्स. ओके, covalent bonds are strong and directional in nature. You know all these things. बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ी है. कोवेलेंट बॉन्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है, नॉट लाइक आयनिक बॉन्ड. Therefore, atoms are held very strongly at their positions. Okay, such solids are very hard and brittle. Malleable नहीं है, brittle है. ब्रिटल होने के पीछे रीजन है क्योंकि बॉन्ड डायरेक्शनल है. दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के पीछे का रीजन है लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग. कई बार इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि इनका थर्मल डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है बट मेल्टिंग स्टार्ट नहीं होता. ओके, दे आर इंसुलेटर्स. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. एक्सेप्शन मिलेगा आपको ग्रेफाइट का. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एग्जांपल आर डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC4 are typical examples of solids like this. Graphite is soft and a good conductor of electricity. It is the exceptional property of graphite. Why? Because अभी जब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्री. तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की वजह से इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है. इट्स एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी एंड आर ड्यू टू द टिपिकल स्ट्रक्चर. कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स एंड ईच एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द 3 अदर. ये देखिए, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है. इस कार्बन एटम को आप कंसीडर करें तो ये 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स से अटैच्ड है. और ग्रेफाइट के केस में हेक्सागोनल फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर होता है. हेक्सागोनल फ्लैट लेयर स्ट्रक्चर. राइट, आप देख पा रहे हैं ये एक हेक्सागोनल लेयर है. Although these bond parameters you need not to study, you need not to learn, but this difference between two bonded layers, 2 layers of hexagonal structure, you must have learned. Okay, 340 picometer का distance होता है और ये आपको याद होना चाहिए. All the students are supposed to switch off their videos as well as audios. Okay, if you want to ask anything, please ask in the
chat box. All right, so 340 picometers, or simply we can say 33.4 angstrom. Yeah, it is a last. Swati, please close your video. Okay. So graphite is soft and a good conductor of electricity. Its exceptional properties are due to its typical structure. Carbon atoms are arranged in different layers and each atom is covalently bonded to 3 of its neighboring atoms in the same layer. The fourth valence electron जो चौथा फ्री रह गया, you all know कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 3 बॉन्ड बन गए हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक यहाँ पर भी फ्री होगा, एक इस एटम का भी फ्री होगा, in this atom as well, this atom as well and this atom as well. तो ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाता है और वो लगभग पाई इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होता है, राइट. सो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से, और वो एक रिंग से दूसरी रिंग में शेयर भी हो सकता है. सो इन दिस वे दे आर हैविंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ऑलराइट, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा. These free electrons make graphite a good conductor of electricity and different layers जिनके बीच में इतना डिस्टेंस है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं. आप बात को समझने की कोशिश करिए. 340 picometer, that is 3.4 angstrom, is a quite large distance as comparing with other solids. Okay, तो इसका आप टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं. Consequently, graphite is used as a high temperature lubricant as well. Okay, a very key property of graphite. Different layers can slide over one another. It makes graphite a soft, solid and a good solid lubricant. Okay, इसे हम high temperature lubricant की तरह use कर सकते हैं. On the other hand, diamond को डिस्कस कर लेते हैं. This is your diamond's structure, tetrahedral. Each carbon atom is surrounded by 4 carbon atoms. Okay, और once again bond parameter आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट ये काफी इजी बॉन्ड पैरामीटर है, आपको लर्न होगा. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता ही 154 पिकोमीटर है. राइट, सो कार्बन in case of diamond is having a tetrahedral structure, bond angle 109 degree 28 minute. राइट, सो ये भी एक नेटवर्क सॉलिड है, बट यहाँ पर कार्बन का पूरा वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ऑलरेडी वो 4 बॉन्ड बना रहा है. So no free electron is there. That's why diamond will never conduct electricity. Okay. Let's recall all the things what we have studied. Okay, types of solid. So as we are studying molecular solids, we have already studied non-polar, polar, and hydrogen bonded ones. Molecular solids, dispersion forces आपके काम कर रहे थे, या London forces, in which case non-polar. In case of polar, we were having the dipole-dipole interactions, and in case of hydrogen bonded, the force of attraction was hydrogen bonding. Examples are there.
For dispersion forces or non-polar solids, we are having argon, we are having CCl4, H2, I2, CO2. And for polar, we are having HCl and SO2. For hydrogen bonded, we are having H2O solid, that is ice. Soft, hard, all are insulator. Melting points very low and then low and low, because dipole dipole interaction या hydrogen bonded structure, hydrogen bonding भी आपके weak forces में ही आते हैं. Now we are going to revise ionic solids. As far as your ionic solids are concerned, the constituent particle is ion. Force of attraction is Coulombic forces. NaCl, MgO, ZnS, CaF2, etc. are the examples. They are hard but brittle. Insulators in solid state, but conductors in molten state. ये solid state में आपके insulators की तरह ही काम करेंगे, and weak conductors की तरह आपके molten state में या फिर dissolved form में काम कर सकते हैं. Their melting points are high because of the high intermolecular force of attraction. Another is metallic solids you are having, constituent particles इनमें positive ions होंगे, और जो environment है वो आपका sea of electrons होगा. Metallic bonding होगी इनमें. Metallic bonding means positive ions of metals are present in the sea of electron. Examples are iron, copper, silver, magnesium. These are hard but malleable and ductile. Conductors in solid state as well as in molten state, and fairly high. What fairly high? Their melting point. As far as your covalent solids are concerned, their constituent particles are atoms. Bonding is covalent, and examples are SiO2, that is quartz, SiC, silicon carbide, C for diamond, and graphite. These are hard insulators and very high. Only in case of graphite, you will see that these are soft and conductor. This is just an exception. This was all about the classification of solids, and these are few questions which you have to go through. These all are very easy questions. You just have to use your brain a little and you will come to the answer. Crystal lattices. Students, this is your homework. You will do some study about the crystal lattices and unit cells. In the next lecture, we will discuss it. Thank you. Keep watching lectures, keep studying, keep learning. Thank you, class. Thank you, sir. Thank you, sir.